Good morning, good afternoon, good evening, whichever part of the world you are in. I hope you are thriving and not just surviving. It's probably good evening for people in Dubai, where I am right now, and the other parts of Asia. But it's good morning for Rahim, who's our guest for episode 8. He's joining us live from Calgary, and it's early morning for him. Rahim, thank you very much for giving the time. Rahim, by the Welcome. way, is a scientist. He's a father. He's a husband, and he loves to philosophize. And he calls himself as a pretend philosopher. So Pretend. I hope you don't just pretend in philosophizing. You actually really philosophize. Ray loves to spread optimism. He's a scientist by profession, लेकिन साइंटिस्ट से वाली जो बोरिंग हरकत होती है वो नहीं है. You could find a lot of creative things coming out of Raheem. Raheem with other friends has started a house of optimism. Raheem blogs and is present on social media by the title called Behta Pani. And I love the title, Raheem, because बहते पानी से बहुत सारी चीजें निकल कर आती है ना. बहता पानी बहुत पावरफुल होता है. बहता Yes. पानी जो है वो इन्फेक्शियस में उसमें इन्फेक्शन नहीं आ सकता नहीं है. होता. And so many so amazing stuff. The book that we are discussing today, interesting book. एंड जब रहीम से बात हो रही थी तो जो है वो रहीम ने जब सजेस्ट की बुक का टाइटल, एंड आई वाज इंट्रीग्ड. I haven't read that book, and I usually read all the books, or I at least listen on audio before the episode. So Ryan, this would be a really exploring the book from my side also for the first time. Yeah. And I'm definitely going to pick up the book and read it in the coming week. So yeah. हमारे साथ जो online है, everybody who's online with us, do leave your name and city in the comments box, so we can put it, or just come and say hi to us. Assalamu alaikum everyone. I'm Shahina Jagriani from Khairpur Meers, Satarja. Shahina, walaikum salam. Shahina, thank you for joining. Rain, we'll quickly jump into the book itself. Perfect. Title, Wisdom of Insecurity by Ellen Watts. Yani, as humans, we are usually thriving and attempting for security. लोग कहते हैं जी जॉब बिल्कुल. सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल. करियर सिक्योरिटी नहीं है, लोग मुल्क बदलते रहते हैं सिक्योरिटी की खातिर. और this talk is about wisdom coming from insecurity. So क्या है Insecurity. जी इसके अंदर? Can you share with us why Yes. insecurity? असल में होता ये कि हम जो है वो यही, आज आपने कहा कि हमारे लोग जो है सिक्योरिटी ढूंढ रहे होते हैं, परमानेंट चीज ढूंढ रहे होते हैं लाइफ के अंदर कि बस ये हो जाए और उसके बाद लाइफ जो है इजी है. हमें बड़ा भी इस तरह किया जाता है कि बेटा आ जाओ, ये बस 1 क्लास कर लो, ये इंटर कर लो, एओ लेवल्स कर लो, और देन योर लाइफ इज इजी, राइट? या जॉब, Right. इफ यू गेट अ ड्रीम जॉब, योर लाइफ इज इजी. Nobody tells you about the challenges you will get in your job, right? So what happens is, like, then you go and then you feel like, oh, damn it, my life is never easy. I should have enjoyed that process while coming to here, like while getting the job. मुझे पढ़ाई का, एजुकेशन का जो एंजॉयमेंट था, जॉब का एजुकेशन एंजॉयमेंट था, वो मैं कर ही नहीं पाया. रादर देन कि यार मैं ऐसी में था कि खुशी वहां मिलेगी. तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के को खुशी नहीं कहते हैं, हम पॉइंट बी पे आने की खुशी कहते हैं. लेकिन जब हम पॉइंट बी पे आते हैं तो हम सोच रहे थे पॉइंट सी कहाँ जाएगा. तो Right. हम हमेशा इस बुक के अंदर ये कहते हैं कि यार वर्ल्ड इज मूविंग, देयर इज nothing in this world which is stationary, which is permanent, which is secure, which is stable. Name one thing Right. which is like permanently there. ये पहाड़ भी जो है वो स्टेबल नहीं है. इरोजन का प्रोसेस हम पढ़ते हैं तो कोई चीज स्टेबल नहीं है. लेकिन हम एज ए ह्यूमन, अब हम जो न्यू सिविलाइजेशन सोसाइटीज में आए हैं, हमें चाहिए स्टेबिलिटी. हमें चाहिए कि हम जमा कर लें अपनी जिंदगी, बस कर लें कि यार हमें अब कोई, हम यहाँ से जो ना लाइफस्टाइल से हम दूर ना भागें. तो अपना को कैद करते जा रहे हैं. और जब हम अपना को कैद करते जा रहे हैं तो हम इस तरह एग्जांपल देता है मतलब किताब के अंदर, he tells you like कि you are a fly in a honey. You like it, honey, Okay. because like it's sweet. You like it, but you are stuck. You're limited in that. You're not unlimited. Like you're restricting yourself, but you like it. So you are hating and liking at the same time, and that creates frustration. So आपको पता ही नहीं है कि आप जो है इनसिक्योरिटी अपने लिए खुद क्रिएट कर रहे हैं. अब जब काम करने जा रहे हैं परमानेंट की तरफ, कि आप जब सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं, आप एक्चुअली इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए. Wow.
ये इस Wow. बुक का अगर मैं फुल अगर बात करूं तो ये इसमें है। This is amazing. यानी the thrive for security is actually creating insecurity. यानी Yes. हमारी जो कोशिश है कि हम किसी तरीके से सिक्योरिटी हासिल कर लें, उस पॉइंट बी पर पहुंच जाए जो हमारी जर्नी है, वो जो है वो itself insecurity क्रिएट कर रहा है. एंड you're so right. हमें हमें सिखाया जाता है. आपने तो एजुकेशन की एग्जांपल्स दी. आपका बेबी मेरे ख्याल में छोटा है अभी, लेकिन जब दो मेरी साल बेटी हुई थी, she's 6 years, तो जब हुई थी तो उन्होंने कहा था कि शुरू के 3 महीने बड़े डिफिकल्ट होते हैं, लोग कहते थे, let them pass and things will be okay. Then कहा कि जी अच्छा अब तो थोड़ा बहुत हिलने जुलने लगी है, तो the next 6 months are difficult. She's 6 years and every day it's a new journey. It's a new challenge, in a way. It's also fun, but it's a new challenge because नई नई चीजें आती हैं. So you're so right. It's crucial that के जो है वो हम जो है वो जर्नी को एंजॉय करें, ना कि डेस्टिनेशन हाँ, को, बिल्कुल। which is amazing. मैंने बड़ा इंजॉय Great. किया था, ये कर लो, ये अचीव, अब सीईओ बन जाओ, उसके बाद आप खुश हो यार। अच्छे बुरे दिन हर किसी की जिंदगी में आते हैं, टफ लाइफ हर कोई एंजॉय करता है। तो बेहतर है कि आप जो है उसको देखें, रादर देन कि यार Right. मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा फिर मेरी जिंदगी। हमें एक्चुअली हमारी फिल्म में भी यही होता है कि हमारी फिल्म्स भी सारी यही कि भाई ये हो गया, शादी हो गई, या मैं ये बन गया, हैप्पीली एवर आफ्टर। हैप्पीली एवर आफ्टर है ही नहीं जिंदगी के अंदर, ये हमें रियलाइज करने की जरूरत है। Exactly. Well, I usually joke with my married friends. I कि ये जो शादी होने के बाद देख कहते हैं happily ever after, ये कौन सी दुनिया में होता ये है? भाई नहीं Great. होता। So that's interesting. All right. So wisdom of insecurity. You saying that he talks about, the crux of the book is that he talks about the whole idea of thriving for security itself is giving insecurity. And I think that's interesting because आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फैली हुई है, बिल्कुल, फ्रॉम बिल्कुल, ऑन द बेसिक्स, जो इंसान की जो जान थी उसके लाले पड़े हुए हैं इस वक़्त. बिल्कुल, Lots of people are leaving jobs, and which creates a lot of anxiety. बिल्कुल। And how does the book talk about that? तो होता ये है कि देखें, एंजाइटी जो है ना वो हर एज में रही है, लेकिन हमारी एजेस में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि Hmm. हम फास्ट लाइफ में आ गए हैं कि यार लेट्स से गाड़ी है, आपकी कोई हेलीकॉप्टर मिलेगा तो उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि यार वो तो और जल्दी पहुंचना चाहिए उसको और Hmm. ज्यादा एंजाइटी होगी कि यार मैं अभी तक जो है ना पहुंचा नहीं हूँ यहाँ पे, मुझे तो ये भी करना है। तो होता ये कि व्हेन यू गो विद द पेस, ऑब्वियसली Hmm. एंजाइटी बढ़ती है आपकी लाइफ के अंदर, इंस्टेबिलिटी Hmm. बढ़ती है, वेदर यू गो फॉर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, यू हैव टू Right. एक्नॉलेज कि यार एंजाइटी आपकी लाइफ में रहेगी। Right. अब हो ये रहा है आजकल हमारी लाइफ के अंदर कि हमें दो तरह की लाइफ को मेंटेन करना पड़ रहा है, एक हमारी फिजिकल लाइफ और एक हमारी सोशल मीडिया लाइफ, राइट? हम वहां पर एक हमारी अलग पर्सनैलिटी है और यहाँ पर एक हमारी अलग पर्सनैलिटी है। ये मतलब साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि हम दो अलग Yes. अलग पर्सनैलिटीज हैं, Yes. ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन। Right. और तो ये हमें एक्नॉलेज, अब हमारे इसमें और ज्यादा बढ़ गया है कि हमें दो लाइफ मेंटेन करनी पड़ रही है रादर देन कि एक लाइफ। तो हो ये रहा है कि जब हम एंजाइटी को देखते हैं तो हम पैनिक कर जाते हैं कि यार नहीं लाइफ में ये हो गया, हम एक उसको परमानेंट सिचुएशन समझने लग जाते हैं। तो एलन वाट्स ये कहता है कि यार जब हम एक परमानेंट चीज समझने लग जाते हैं, खुशी को या पेन को या प्लेजर को, होता ये कि देन यू स्टार्ट टू गेट इनसिक्योर, देन यू स्टार्ट टू Hmm. अक्यूमुलेट एवरीथिंग इन लाइफ कि यार नहीं ये भी Hmm. होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हम इसको अलग अलग देखते हैं, पेन और प्लेजर को अलग अलग देखते हैं, लेकिन इस बुक में वो एग्जांपल देता है एक एक टेलीस्कोप की और एक बिल्ली की, एक कैट की, ठीक है ना? कि अगर एक छोटे से आपके पास टेलीस्कोप है तो आप देखते हैं कि पहले और आपने कभी कैट नहीं देखी हुई जिंदगी के अंदर, Hmm. राइट? तो कैट Hmm. का फेस आपके सामने से गुजरता है, देन उसकी बॉडी गुजरती है, देन उसकी टेल गुजरती है, राइट? Right. तो Hmm. आप सोचते हैं कि यार पहले ये आता है, बस इसका फेस आता है, इसमें आंखें लगी हुई हैं, फिर एक कोई चीज आती जो गोल सी है, बॉडी सी है, और फिर एक ऐसी चीज आ रही जो टेल जैसी है। अब जब आप उसको फुल पिक्चर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इट्स वन कैट, इट्स नॉट सेपरेट। Right. आप उसको एक Right. टेलीस्कोप से देख रहे हैं, आप एक बहुत छोटे से एंगल से उसको देख रहे हैं, तो यू फील लाइक यार पहले ये होता है, फिर ये Hmm. होता है, फिर ये आ रहा है। Hmm. Hmm. आप पेन और प्लेजर को भी इस तरह देख रहे होते हैं कि हम पहले पेन आ रहा है, पहले प्लेजर आ रहा है, और फिर मेरे पास ये आ रहा है। ऐसा नहीं Hmm. है, अगर प्लेजर आ रहा है वो उसकी गारंटी के साथ आ रहा है कि पेन आएगा बाद में। Okay. जितना आप सेंसिटिव होंगे पेन के लिए या प्लेजर के लिए, उतना ही Hmm. आप सेंसिटिव होंगे उसके ऑपोजिट के लिए। इस तरह Right. लाइफ अगर आती तो इस गारंटी के साथ आती कि डेथ आएगी। Hmm. कोई एक लाइफ ऐसी नहीं है जो कि इस गारंटी के साथ नहीं आती है। इवन Right. स्टार्स टूटते हैं, मतलब मैसिव, इट ब्रेक्स डाउन। Hmm. बट लाइक Hmm. हम चाहते हैं कि भाई हमारी जिंदगी जो है ना स्टेबल रहे। ये क्या चीज दुनिया में स्टेबल, क्या चीज जो है वो एंग्जाइटी
अगर मूवमेंट, जिस तरह हम जानवरों को देखते हैं कि यार दे हंट, दे गेट हंटेड, तो दे डोंट मेक अ प्रॉब्लम, लेट्स कॉल इट अ प्रॉब्लम आउट ऑफ इट, राइट, कि ये राइट। पार्ट ऑफ लाइफ फॉर देम एट सम पॉइंट। हम क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं यार हमारे लिए एक स्ट्रेस। लेट्स से कि मेरा एक ऑपरेशन है 2 हफ्ते बाद, मैं अभी बिल्कुल सही हूँ, राइट, लेकिन मैं 2 हफ्ते बाद ऑपरेशन है, मैं अभी से जना उसकी टेंशन लेके बैठ जाऊंगा कि यार ये हो रहा है। हालांकि अभी मुझे खाने पीने की टेंशन नहीं है, मैं सुकून से जिंदगी गुजार सकता हूँ 2 हफ्ता, लेकिन नहीं, मैं उसकी टेंशन में रहूंगा कि यार 2 हफ्ते बाद जो है ना मेरी वो एक सर्जरी है, तो भाई मैं अभी से टेंशन ले रहा हूँ उसकी। तो होता ये कि जब हम अपने पास जब इस तरह की क्रिएशन क्रिएट ना, पेन और प्लेजर को अलग अलग समझते हैं ना, तो हम इसको टाइम वाइज समझते हैं, तो ये आई थिंक एक But हमारी एंजाइटी क्रिएट करता है। as humans, aren't we made in this particular way कि हमें the anxiety of future की रहती है हमेशा, that's isn't that part of our system? How does Alan Watts identify this in the book? Actually, he identifies this as like we are not actually like, if you see humans how we evolved, we did not evolve for that. ये बहुत ज्यादा न्यू कॉन्सेप्ट है फॉर ह्यूमंस के। हम जब सिविलाइजेशंस को देखते हैं और हमें एक ये कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है हर रिलीजन के अंदर कि फ्यूचर एक फाइनल फ्यूचर भी है, कि आफ्टर डेथ फ्यूचर भी है, right? So we kind of get comfortable with that, right? Either comfortable or uncomfortable, whatever like your beliefs are. तो ये भाई ये कहता है कि हम किस तरह से अपने फ्यूचर को जब देख रहे होते हैं, तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है हमारी सिविलाइजेशन के लिए। वी वर नॉट इवॉल्व फॉर दैट। अगर आप ओल्ड मतलब एंशिएंट ह्यूमन को देखें, तो वी वर नॉट डूइंग लाइक दैट। वी वर हंटिंग फॉर अ डे। हमारे पास फ्रिज नहीं थे, तो वी वर जस्ट हंटिंग फॉर अ डे, और लाइक व्हाटएवर जो हमें मिल रहा था हम खा रहे थे, हमें जो भी हम कर पा रहे थे हम कर पा रहे थे। सो आई थिंक ये एक जो एंजाइटी वाली सिचुएशन जो हमने अपने लिए क्रिएट की है, और वो क्रिएट कैसे की है, स्टेबिलिटी लाने के लिए, कि भाई Right. हमारी लाइफ स्टेबल रहे, हम हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन रहे। हमने खुद ये चीज क्रिएट कर ली अपने लिए कि हम इसके बगैर नहीं रह सकते, ऑल्दो हम रह सकते हैं, बट ये कि हमने एक चीज क्रिएट की, अपने एंजाइटी ऑफ स्टेट्स हमने क्रिएट की है अपने लिए, और इसके बाहर हम नहीं निकल पा रहे। Okay, that's interesting. So again, I think this is interesting कि the whole idea कि stability लाने के लिए हम जो है वो constantly जो है वो security या stability लाने के लिए constantly anxious रहते हैं, anxiety रहती है, बिल्कुल इसी वजह से जो है वो insecurity जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। And then again the question के वो लोग कहते हैं ना कि जी time जो है, and when we were chatting you were telling me about this from the book कि टाइम में जो है वो चीज़ें सेटल हो जाती हैं, चीज़ें ठीक बिल्कुल हो जाती हैं। एंड हाउ डज़ एलन वाट्स टॉक अबाउट दैट? इज़ टाइम रियली अ हीलर और इज़ इट एक्चुअली अ पेन प्रोवाइडर? So, इनका एक चैप्टर है बुक के अंदर कॉल्ड पेन एंड टाइम, राइट। तो वो ओके। कहता है कि इन जनरल हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि टाइम एक्चुअली जो हर पेन को हील कर देता है, और हुँ, फिर आपको इतना पेन फील नहीं हो रहा होता। ऑब्वियसली हुँ, इन योर कॉन्शियसनेस आपको वो फील नहीं हो रहा होता, ये बात बिल्कुल हुँ, सही है, बट लाइक इन अ बिगर पिक्चर, हुँ, टाइम ही है जो आपको पेन प्रोवाइड कर रहा होता है। जब मैं ये बात करता हूँ अपने सेमिनार्स में, तो लोग परेशान हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि यार so what are you talking about? I used to feel intense pain when that incident, let's call it an incident, happened. Now I don't feel that intense pain, but I still राइट। think about it. तो हुँ, मेरा कहने का मकसद यही था कि टाइम, क्योंकि you think about it, you think about your past experiences, your past grief, your past mistakes, makes the time actually the person or a thing which actually kills you, which kills your creativity, which kills your morality. होता ये कि जहां तो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, हम आगे के टाइम के बारे में सोच रहे होते हैं कि यार हम आगे अब क्या करना है लाइफ में, इसको लेके हम इनसिक्योर हो रहे होते हैं, उस पे हम पेन ले रहे होते हैं। हम सो नहीं पाते रात में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब सोने की प्रॉब्लम हो रही होती है रात में, उनका मेन प्रॉब्लम यही होता है कि यार वो पास्ट में होते हैं या वो हुँ, फ्यूचर में होते हैं। हुँ, They're anxious about like what I will do in life or what I have done in life. So हुँ, right now, like इसमें वो कहता है कि pain and time में, like if you want to define yourself, how would you define yourself, right? हमसे अगर कोई पूछता राइट। है कि यार let's say आपने मुझसे पूछा how would you like to introduce yourself, तो मैंने कहा हुँ, यार I'm a pretend philosopher, क्योंकि इस वक्त मैं pretend philosopher हूँ, इस वक्त मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। कहते हैं कि जब आप डिफाइन करते हैं अपने आप को यू, तो आप हमेशा बताते हैं कि यार मैंने ये किया हुआ है, मेरी ये हुँ, डिग्रीज है, मेरी ये एजुकेशन है, मैं ये हूँ, लेट्स से। हुँ, हुँ, हम ये नहीं बताते कि अब उस वक्त उस मोमेंट में हम क्या हैं, व्हाट आर वी राइट, इन दैट मोमेंट। राइट, राइट। हम इस चीज को भूल जाते हैं, राइट। और ये हमारी सोसाइटी का एक इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज हो गया है
जिस तरह हम एक टाइम जो है, हमने इसको एक वो भी लिया हुआ है कि टाइम एक सिंबल है, एक सिंबल है जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है मैच करने के लिए, कि अगर लेट्स से कि हमें ऑनलाइन आना था एक सेम टाइम पे, तो वी डिसाइडेड कि यार हम इस टाइम पे ऑनलाइन आएंगे, लेकिन हम अपनी Hmm. वॉचेस आगे पीछे कर भी दें, तो क्या एक्चुअल टाइम चेंज होगा? Because like No. what we have decided, what we have thought of time is like कि यार हमने उसको एक एज अ सिंबल की बजाय हमने उसको एक रियलिटी और एक वो कंसिडर नहीं किया है, हमने उसको सिर्फ एक मतलब रियलिटी, आई एम सॉरी, मतलब उसको रियलिटी कंसिडर कर लिया है, कि रादर देन उसको एज अ सिंबल की तरह यूज करने के लिए कि इस Hmm. वक्त हम मैच कर सकें टाइम्स, या हम आगे की प्लानिंग कर सकें इन अ Hmm. अनएंशियस वे, हमने उसको Hmm. एक वो क्रिएट कर दिया कि हम पास्ट या फ्यूचर में ही रहते हैं, हमें Hmm. पता ही नहीं है। जब हमसे आप पूछते यू व्हाट आर यू राइट नाउ, Hmm. Hmm. you are a listener right now, people are Hmm. listener right now, so we don't define ourselves in now. Hmm. So ये Hmm. एक सोसाइटी के अंदर जब क्रिएट होता है ना, तो पेन एंड टाइम यहाँ पे वो बात करता है कि यार हमने किस तरह से टाइम को एक्चुअली अपना पेन, क्या बोलेंगे यार इसको, पेन किलर तो नहीं कहेंगे, बट लाइक पेन Inducer इंड्यूसिंग बना दिया, एजेंट, हाँ वो, inducing हाँ, हाँ, हमने इंड्यूसिंग एजेंट बना दिया है। right. But Rain, easier said than done, isn't it? बिल्कुल You बिल्कुल know, ऑब्वियसली। and I'm sure Alan Watts, जो है वो किताब में he goes much deeper into you know how to come out of that, you know how to come out बिल्कुल that constant anxiety of future or बिल्कुल grief of the past, you know, बिल्कुल। which is हर self help book में या हम्म, पेन मैनेजमेंट में या ट्रॉमा मैनेजमेंट में भी बात होती है दैट यू हैव टू लिव इन द नाउ। हम्म, पिछली एपिसोड जो हमारी थी बिब्लियोफाइल सर्कल की, उसमें वी वर बिल्कुल टॉकिंग अबाउट माइंडफुलनेस व्हिच इज अगेन अबाउट बिल्कुल समथिंग टू डू विद नाउ, राइट? सो बिल्कुल। हाउ डू वी कम इनटू द नाउ? you know um, how does a book talks about it, you know, सही। how to actually gain from the wisdom of insecurity rather than getting हम्म, anxious? हम्म। तो पहली चीज मैं खाली बताऊं नुमान, ये सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये फिलोसफिकल बुक है। तो Yes. इट जस्ट टॉक्स अबाउट मोर ऑफ आइडियाज लाइक ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन एग्जिस्टेंस Honestly, के। Raheem, for me, every book is self-help, you know, because this, you know, इस genre से मुझे थोड़ा सा problem है जब लोग कहते हैं ना self-help, because every book that you pick up, you're actually helping yourself, you That's know, true. That's true. by Yeah. Yeah. getting the concepts, by getting some ideas or some insightful, you know, मुझे याद है मेरी and I'm deviating from the topic, but very quickly, मेरी one of the guests से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी let's talk about Sapiens, and then he goes on and he says, but Sapiens पे जो है वो it's not a self help book, and I'm like, you know, and it may not give any actionable insights, but Hmm. you know, but then when we started digging deeper, and Sapiens is coming inshallah in future, but वो एक episode में नहीं हो सकती, it might be 2 episodes, but Sapiens के अंदर there is tons and tons of actionable insights. So yeah, so for me every book is a self help book, you know, because you help yourself with the book. But Yes, yeah, that's true. nonetheless, That's true. you know, and then a lot of these self-help books actually build on these concepts, you know, जो Yes, that's true. philosophers देखे Philosophies, गए। बिल्कुल, So बिल्कुल, yeah, how do you stay in the present? How do you talk about time is just a symbol or it's not? You बिल्कुल, know, बिल्कुल। easier said than done. इस वक्त मुझे फिक्र है, you know, next week क्या होगा मेरे लिए? So बिल्कुल, yeah. बिल्कुल। तो ये असल में ये जो कहता है ना, कि कहता है कि यार हाउ कैन यू लिव इन नाउ इज लाइक, Hmm. don't live in future, but like again easier said than done, but like one actionable item what we can get from this book is like he says like at least spend time with yourself। होता ये कि in general हम लाइफ में दूसरों के साथ टाइम गुजार रहे होते हैं, अपने Right. साथ, मतलब the time you spend with yourself is not watching movies or reading a Hmm. book, even reading a book you're reading someone else's ideas, right? Hmm. आपके अपने आइडियाज क्या है, Hmm. आपके अपने आइडियाज आप किस तरह से देख सकते हैं जब आप अपने साथ बैठें और Hmm. कोई किताब नहीं उठाएं, किसी कोई फोन नहीं उठाएं, कोई टीवी ना देखें, जस्ट लाइक स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। और होता ये उससे कि जब आप अपने साथ टाइम गुजारते हैं ना, तो आपको अपने आइडियाज है, यू गेट शॉक्ड एक्चुअली। मैंने जब शुरू किया मुझे एक्चुअली शॉक लगा यार, रियली आई एम थिंकिंग दैट ये आइडिया मेरे पास कैसे आ गया अचानक से। तो यू स्टार्ट टू बी मोर क्रिएटिव। मेरे ख्याल है जब हम थर्ड पॉइंट पे आएंगे तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ एक्चुअली हेल्प्स टू बी नाउ। आपको पता चलता है कि यार आप एक्चुअली सोच क्या रहे हैं। बट अगेन Okay. सोचना इज नॉट दैट इजी। यू स्टार्ट टू गेट डेविएटेड, बट यू डोंट नीड टू फाइट विद दैट। जहां पर आपका दिमाग चाहता है, अगर यार मैं डिस्ट्रैक्ट जाता मेडिटेशन में, बट लाइक लेट इट डिस्ट्रैक्ट, जहां जाना है आप जाए, जो सोचना है Right. सोचिए। So book a date with yourself basically यस, every day. यस, Yeah, यस। that's one of the actionable insights from the book. And then just observe कि क्या thoughts आ रहे हैं, क्या बिल्कुल, क्या बिल्कुल, thinking है.
आपका दिमाग आपको लेके कहाँ जा रहा है, बिल्कुल एंड many a times वो थॉट्स भी पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड ही होते हैं, if you बिल्कुल notice, बिल्कुल बिल्कुल rather than in the now. And I think this is exactly where philosophers comes in, that you look at past and future, and then you again anchor yourself in the now, and you talk बिल्कुल about, hey, it is insecure, बिल्कुल and let's enjoy the journey itself. बिल्कुल So that's interesting. One of the other things that we were actually talking about, जो book में से थी, वही थी कि creativity comes out of हम्म, instability. बिल्कुल यानी and I think वो मुझे एग्जैक्टली इसके वर्डिंग्स याद नहीं है, लेकिन वो जो इकबाल का एक शेर है ना कि खुदा तेरे क्या है वो, तेरी मौजों में इस्तराब नहीं, कि हम्म, इट्स समथिंग लाइक कि वो समंदर से कह रहा है कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, यस, खुदा, ओके क्योंकि तेरे बहर की बिल्कुल मौज में इस्तराब नहीं, कि तेरे बिल्कुल समंदर की मौज में वो तेजी नहीं है. सो तेजी हाउ नहीं डज है instability creates creativity? बिल्कुल एक्चुअली ये कहता है इसी किताब में एक चैप्टर है आई थिंक इट्स लाइक चैप्टर नंबर 8 सो इट्स लाइक 9 चैप्टर्स इन टोटल बट लाइक चैप्टर नंबर 8 इज क्रिएटिविटी मोरालिटी so what it Mhm. talks about like when we face instability human instincts जो हैं वो either वो जिस तरह कहते हैं fight and flight response जो है हम fight जो है वो creativity और morality के साथ भी करते हैं तो it gets exposed अगर कोई मतलब इस तरह so let's say take an example of COVID right now बहुत Mhm. ज्यादा कुछ रेस्टोरेंट्स है जिन्होंने अडॉप्ट किया है उन्होंने बूथ्स बना दिए हैं मतलब सेटिंग के जिम्स ने अडॉप्ट किया है कि उन्होंने जो है ना वो रनिंग मशीन्स जो हैं उनके लिए मतलब वो स्लाइडर्स बना दिए हैं तो दे स्टार्ट टू गेट क्रिएटिव मास्क के जबरदस्त डिजाइन आ गए हैं तो Mm. मतलब पीपल स्टार्टेड टू गेट मतलब क्रिएटिव अगर ये कोविड नहीं होता तो ये सारी चीजें हम शायद नहीं देख पाते लाइफ स्लो हुई लोगों ने अपने आप को सोचना शुरू किया जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल इस टाइम में क्रिएट किया मुझे करना था काफी टाइम से बट लाइक आई स्टार्टेड एट दिस टाइम क्यों क्योंकि Mm. भाई इनस्टेबिलिटी आपके आसपास जो होती है आपको फोर्स करती है कि यू डू थिंग्स व्हाट यू वांटेड टू डू इन द फर्स्ट प्लेस तो Right. आप जब स्टार्ट करते हैं आप इंजॉय करना शुरू करते हैं आपकी क्रिएटिविटी एक्सपोज होती है जब आप इंसान देखता है ना कि यार इनस्टेबिलिटी अब मैं क्या करूं आइदर वो बिल्कुल ही शट डाउन हो जाएगा या Mm. वो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी या मोरालिटी के पर्सपेक्टिव्स में आ जाएगा और बहुत ज्यादा चीजें क्रिएट करनी शुरू कर देगा तो ये कहता है Okay. कि भाई आप इस चीज को एंजॉय करें आप अपने आप को ट्रेन इस तरह करें कि अब जो लाइफ में इंस्टेबिलिटी तो है आप वेट नहीं करो कि इंस्टेबिलिटी Right. आएगी लाइफ में हर लाइफ इज ऑलवेज इनस्टेबल यू नेवर Right. नो व्हेन यू विल डाई Right. आपको पता ही नहीं हम मैं अगले मिनट मर जाऊं मुझे तो नहीं पता तो Right. यू जस्ट लाइक एक्सेप्ट इट हमें एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है ये बात इट्स perfectly fine but like train yourself right you train yourself with meditation or being in now तो आप ये करते हैं कि you start to get creative with that right तो Mm. अब वो ये कहता है कि जब आपकी इंस्टेबिलिटी आती है तो आप जब मतलब लेट्स मतलब इसमें एक एग्जांपल भी देता है बहता पानी की और मेरा जो चैनल का नाम मैंने इनसे इंस्पायर्ड होकर रखा हुआ है तो इसमें एग्जांपल भी ये देता है कि भाई बहता पानी की कि it's always flowing but you never Right. see water crying right it's like Right. the power of water like हर religion के अंदर वो कहता है कि यार water की examples दी जाती हैं water को एक बहुत ज्यादा सिग्निफाई किया जाता है एक सिंबल बनाया जाता है वाटर का चाहे वो क्रिश्चियनिज्म मतलब क्रिश्चियनिटी हो जुडाइज्म हो मतलब इस्लाम के अंदर है आब जमजम का तो Mm. आई थिंक हर 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 रिलीजन के अंदर भी पानी को वो दिया जाता है लेकिन पानी एक इनस्टेबल एलिमेंट है तो Mm. मतलब सॉरी कंपाउंड है अगर मैं साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में होता तो Yes. ये तो बड़ा बहुत बड़ा मतलब मैं Yes. Yes. क्राइम हो जाना Yes. था मेरे से बट ये लाइक साइंटिस्ट को आप मुझे एक्नॉलेज बचपन की करें केमिस्ट्री याद आ गई. हाँ तो आप Right. बहुत ज्यादा जो है अपने आप को इनस्टेबिलिटी के लिए ट्रेन करना शुरू करें और देखें कि लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है व्हेन यू गो फॉर स्टेबिलिटी आपका अगर गोल स्टेबिलिटी है देन होता ये कि देन यू आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड विद दैट कि आप सोचते हैं यार अभी ये नहीं आया आप खुश एक कम कमाने वाला इंसान भी खुश रह सकता है ज्यादा कमाने वाले इंसान से एक अच्छे बुरे दिन जो है ना वो ऑलमोस्ट हर किसी की लाइफ में सेम ही आते हैं ऑलमोस्ट इंस्टेबिलिटी जो है वो ऑब्वियसली डिफरेंट लेवल की इंस्टेबिलिटी आती है लाइफ के अंदर बट एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी ड्यूरिंग दीज टाइम्स हर But टाइम इंस्टेबिलिटी का टाइम how do you and what does the book talk about? Because of course we're not talking. It's a book lovers club, Bibliophile Circle. So we're actually discussing, all those who've joined us. We're discussing a book called "The Wisdom of Insecurity" by Ellen Watts. So how does the book talk about Rain? Ke
how do you create instability to get that creativity? Do you actually go and make yourself unstable? उल्टी सीधी हरकतें वो यही ताकि दिक्कत करते ना हैं। No, but the thing is, what he talks about in his book is like एक चैप्टर है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, आई थिंक चैप्टर नंबर 7 है। वो ये कहता है कि देन मतलब जब हम कहते हैं कि यार इनस्टेबिलिटी इज दैट, और हम क्या करते हैं, हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इंस्टेबिलिटी। आई थिंक दैट्स अगेन अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। कहते हैं ना हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, ना हमें इंस्टेबिलिटी की तरफ जाना है। Hmm. हमें एक्नॉलेज करना है कि इंस्टेबिलिटी है, एंड देन गो विद द फ्लो। मतलब हम रिवर के अंदर, रिवर का फ्लो अगर यूं है तो हम स्विमिंग यूं नहीं कर सकते। Right. हमें स्विमिंग इजी रहेगा हमें विद द फ्लो ऑफ द वाटर, राइट? अब वाटर Right. मूव कर रहा है, इनस्टेबल है, अर्थ मूव कर रही है, हर चीज चेंज हो रही है, आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब चेंज हो रहा है। आप अब उसको परमानेंटली आप अच्छे उस पे करने जाते हैं या परमानेंटली आप बुरे करने जाते हैं, आप दोनों तरफ मतलब फ्रस्ट्रेटेड होंगे। आपकी लाइफ Hmm. एक साइन कर्व की तरह चलती है, अप्स एंड Hmm. डाउन आएंगे लाइफ में। इस चीज को Hmm. एक्नॉलेज करने की जरूरत है। देन यू गो फॉर मेडिटेशन। मतलब मेडिटेशन का भाई एलन वॉट्स हर अपनी किताब में कहेगा, हर अपने लेक्चर्स में कहेगा, और वो एक्चुअली जापान में जाके बुद्धिज्म को स्टडी भी करके है। लेकिन मेरे ख्याल है जैन के साथ आप जब बात करें तो आपने एक सवाल भी किया था कि आपके पास सवाल आता होगा मेडिटेशन या माइंडफुलनेस जब आप बात करते तो ये इसका कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म के साथ है। Hmm. वो कहता है कि यार हर रिलीजन के साथ है, हर इंसान के साथ है, हर मतलब एंशिएंट मतलब ह्यूमन बीइंग वाज डूइंग इट, हर इंसान करता रहा है, और ये कोई रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है। अगर एक रिलीजन में ये चीज है, इसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया एक रिलीजन में, इसका मतलब ये नहीं कि उनका कॉपीराइट है इस पे। इसका मतलब ये नहीं है कि यार उन्होंने ये चीज क्रिएट की है, नहीं, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि ये चीज काम करती है और उन्होंने इस चीज ग्लोरीफाई किया हुआ है। Hmm. So it does I, not I make think you daily practice of 5 minutes of prayer is also an example of meditation, बिल्कुल right? बिल्कुल It's a different form of meditation. So, बिल्कुल yeah, that's a different debate. But meditation is going inside. जिसको कहते यस हैं ना कि जी, यस वो आप I think before we started the episode you were sharing that वो बुल्ले का जो शेर है मेरे ख्याल में काफी मशहूर है ये। बिल्कुल हाँ बहुत सारे लोग जो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं दे कोट हिम अलॉट वो बिल्कुल अपने आप नु पढ़िया नहीं सो अपने आप यू में नो पढ़िया ही नहीं yeah so yeah so spend time with yourself, be in the now, uh and then seek, you don't need to seek security or in insecurity. don't go uh for it but but I think this is interesting. Creativity comes from instability, and I think you need to prototype instability around you बिल्कुल and सी मतलब दुनिया ने कभी सोचा नहीं था कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्रीज उठाएं तो लोगों ने पेंडेमिक्स पे बात की भी है। ये भी है लोगों बिल्कुल ने लोगों ने प्रिडिक्ट भी किया हुआ था कि पेंडेमिक्स आएंगी। देयर आर फ्यू डॉक्यूमेंट्रीज ऑन नेटफ्लिक्स आल्सो। द चैलेंज इज कि हमने क्या उस पेंडेमिक को प्रोटोटाइप करके कुछ प्रिपेयर किया। प्रोबेबली इफ यू वुड हैव प्रिपेयर्ड इट वी वुड हैव बिल्कुल बीन मच मोर क्रिएटिव on that than right now. So I think this for me in the whole episode, this was this aha moment ki creativity comes from instability, and these days I'm teaching a lot of agility to organizations. So and then agile frameworks में वही बात होती है कि create the ecosystem and then make it unstable and then see how agile are you to respond to that. बिल्कुल And I think as a human being वही आपकी जो बात है कि अपने साथ बैठो और ये सोचो कि even if I feel stable right now, बिल्कुल what is that one thing that would make me unstable? And if बिल्कुल that happens, how do I actually play prepare for around? How am I prepared for it? So I think that's an interesting insight with this. One more action items before we move on towards the end, and you were talking about write your dreams that you राइट got योर from the ड्रीम्स। book, बिल्कुल मतलब right? आप So अपने ड्रीम्स को so जर्नल करना शुरू करें। ये अपनी किताब में एलन right, वाट्स कहता है कि हम जब कहते हैं कि यार आवर थॉट्स आर प्राइवेट, आवर आइडियाज आर प्राइवेट, व्हाट वी आर थिंकिंग इज लाइक गेनिंग, हमको क्रिएटिव आइडियाज कैसे आएंगे। जब हम hmm, क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो होता ये कि व्हाट वी आर थिंकिंग राइट नाउ, hmm, व्हाट जो भी हम आइडिया सोचते हैं वो वर्ड्स की बाउंड्रीज में रह के सोचते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं अगेन hmm, रिपीट करता हूँ कि हम वर्ड्स की बाउंड्रीज में रह के करते हैं, right, और hmm, ये वर्ड सोसाइटी डिक्टेटेड है। ये hmm, वर्ड्स जो हैं आपको लिमिट करते हैं कि आप वर्ड्स की बाउंड्रीज में रह के सोच सकते हैं, आप इसके बाहर निकल के नहीं सोचते। तो आपकी जो कॉन्शियस थिंकिंग है, आप जो इस वक्त सोच रहे हैं राइट नाउ, आप वर्ड्स के बेसिस पे सोच रहे होते हैं, राइट? यू कैन नॉट मुझे थिंक मुझे समथिंग विदाउट वर्ड्स। फिलोसोफर विटकिंस्टाइन याद आ गया, द होल लिंग्विस्टिक्स का जो बिल्कुल चैलेंज है। या बिल्कुल ऑलराइट, या अ, और ये भी मतलब रिसर्च है कि हर लैंग्वेज वाला बंदा, मतलब जैसे आई स्पीक उर्दू और इंग्लिश, आई कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ आइडियाज ऑफ इंग्लिश, आई कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ आइडियाज ऑफ उर्दू।
राइट. इसलिए कहते हैं मल्टीलिंगुअल्स हैं ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के थॉट प्रोसेस में सोच सकते हैं. बट ड्रीम्स आर एक्चुअली irrespective of your words, like they are irrelevant of your words. अब जो भी words हैं वो dreams आपको unconscious mind में सोचने की ability देता है. और let's say कि जैसे स्टीफन हॉकिंग है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को जनरल रिलेटिविटी थ्योरी, मतलब इतनी क्रेजी थ्योरी कोई इंसान सोच नहीं पा रहा, उसको कैसे आई? उसने ड्रीम किया था. ठीक है ना. तो इस तरह के बहुत सारे फिलोसफर्स हैं. So by dream, you actually mean dreaming. The dreams ड्रीमिंग, that we ड्रीमिंग, that we ड्रीमिंग experience or नाइट. see यस, or in the yes. I'm night. not talking about those dreams or goals. वो तो Okay. obviously आपको लिखने चाहिए. That's like another thing. But when you Hmm. talk about philosophy, ये कहता है कि भाई अपने ड्रीम्स को एक्नॉलेज करें, क्योंकि एक्चुअल आइडियाज जो हैं वो आपको सोते हुए, क्योंकि आप वर्ड्स जो हैं आपके प्ले नहीं कर रहे थे, रोल नहीं प्ले कर रहे थे, देन यू कैन गो बियॉन्ड योर ओन बाउंड्रीज एक्चुअली. तो Hmm. जब आप वो लिखना, आप जर्नल लिखना शुरू करते हैं, देन यू विल एक्चुअली स्टार्ट टू रियलाइज कि यार यू कैन बी मोर क्रिएटिव देन व्हाट यू आर राइट नाउ. All right. That's बहुत interesting. सारे साइंटिस्ट जो हैं, फिलोसफर्स जो हैं, वो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि यार वी गॉट दिस आइडिया इन आवर ड्रीम. All right. नॉर्मल लेवल पे सोचा ही नहीं जा सकता था. Okay. Wow, that's interesting. वो and then I think वो बहुत सारे लोग हैं ना जो कहते हैं कि ख्वाबों को डिकोड करते हैं and quite a few other things. So so that probably it comes from their challenges कि कुछ लोग मेरी तरह के जो होते हैं, I don't remember my dreams. It's very rare that I remember my dreams. That's Uh, true. That's but true. it's interesting, my daughter is 6 years old and वो बताती रहती है कि sometimes she gets nightmares, sometimes she gets dreams and she's like मुझे dream में ये आया वो आया, and you could see and it's interesting. I think I can go into the details of this, but this is amazing. So thank you, Rain. This was an excellent episode, and we will continue with insights from the book on our Facebook page, the Bibliophile Circle. Please, you could see the spelling over here. Go and join the group. G. Do not. There's a page also that we made, but I think we need to remove the page. A group is much more, bounded. So I think we'll keep that. And then Raim would continue the discussion on the Bibliophile Circle group. Excellent book. This was. Wisdom of insecurity. हम as humans जो है वो constantly security और stability के पीछे भाग रहे होते हैं, whereas creativity actually comes from instability, and there were some really cool insights that we got from this episode, as well as how you could actually live in the now and how you could anchor yourself in the now. Thank you, Rain, for giving time, Thanks for and inviting me. giving time early in the morning. As I said earlier in the episode, Raim is joining us from Calgary, and interestingly, this is city number 8 in terms of Right. our guests. City number 7, sorry, episode 8, city number 7. We've had Sydney on one hand to Calgary on the other. So I think Right. that's amazing. Everyone who's joined us, this is the Bibliophile Circle. It's a virtual book club. If you have an amazing book that you would like to share, please drop in a message to us on Funworks, and we'll take it on from there. See you next week, Sunday. Stay connected to our YouTube channel and Facebook channel, and you get the details over there. Thank you. Perfect. Have a good day.